बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। क्लास 1, लेकिन इससे पहले कि आप क्लास 1B सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की जो लेक्चर है वो देख ले, आपको चाहिए कि आप क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लॉकर्स और इससे पहले द पैथोफिजियोलॉजी एंड द मैकेनिज्म्स व्हिच कॉज द कार्डिक एरिथमिया, और उससे पहले जो है उसको समझने के लिए आपको नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जो है वो समझना चाहिए। तो उसके लिए इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई है आप उसे ज़रूर देख लें। और आज की जो वीडियो है, इन दिस ट्यूटोरियल वी विल स्टडी अबाउट द क्लास 1B sodium channel blockers. So what are the class 1B sodium channel blockers? What are its general features? So we will discuss in these in the drugs which belong to class 1B in the detail. We will study this. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, it has the minimal sodium channel blockers activity. Minimum sodium channel blockers activity, and it is due to the rapid dissociation constant of this 1B sodium channel blockers. ये जो सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड हो जाता है तो अबाउट 3 सेकेंड्स उसके साथ बाइंड रहता है, अबाउट 3 सेकेंड्स, और फिर इससे क्या होता है, उससे दूर हो जाता है। तो इससे मिनिमल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एक्टिविटी, एंड इन दिस ड्यू टू द मिनिमम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एक्टिविटी इट हैज़ मिनिमल इफेक्ट on the phase 0 depolarization, because the phase 0 depolarization is due to the sodium channels, sodium currents, and sodium currents goes through this sodium channels. तो क्या होगा, so it will have a minimal effect on the phase 0 depolarization, and that's the conduction velocity, as we have already discussed. It will have minimal effect on the conduction velocity. The second important property is that it is the effective refractory period is unaffected due to the class 1B sodium channel blockers. It has no effect or very little effect on the effective refractory period, and this effect in the form of shortness. ये शॉर्ट हो जाता है, इफेक्टिव refractory period या बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं होगा या शॉर्ट होगा, इन कंट्रास्ट टू क्लास 1B जिसमें प्रोलॉन्ग होता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट बाइंड्स प्रेफरेंशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू द इनएक्टिवेटेड स्टेट देन टू द ओपन स्टेट। एट कंट्रास्ट टू क्लास 1, जो ये दोनों के साथ बाइंड करता है क्लास 1B, लेकिन प्रेफरेंशियली इनएक्टिवेटेड के साथ, और क्लास 1A जो था वो ओपन के साथ प्रेफरेंशियली बाइंड करता था। एंड दिस इज ड्यू टू एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इनएक्टिवेटेड स्टेट is much more in the partially depolarized cells like the ischemic tissues, and the cells which much more prolonged action potential duration occurs due to the potassium channel blockers, or due to the drugs like phenytoin etc. तो क्या होगा कि जो लाइडोकेन होगा, जो क्लास 1B ड्रग्स होंगे, फॉर एग्जांपल लाइडोकेन, ये इन दीज सेल्स में, इन दिस काइंड ऑफ सेल लाइक पार्शियली डिपोलराइज्ड सेल और इस्कीमिक सेल्स और सेल्स विद लॉन्गर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, वो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे बाद में भी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है, ये डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी बाय डिक्रीजिंग द पेस फॉर डिपोलराइजेशन। द फिफ्थ important point is it has, as we have already discussed, that the automaticity is mainly due to the pace for depolarization. Fifth important point is that it has a minimal effect on the ECG. In contrast with other drugs. And the sixth and the other most important point is that it has no effect on the atrial arrhythmia. And the reason is that the action potential duration is so small in these atrial muscles that the sodium channels are inactivated state for very short time as compared to the resting state. जिस तरह हमने पढ़ा कि सोडियम चैनल जो है वो क्लास 1B जो है वो प्रेफरेंशियली किसके साथ, इनएक्टिवेटेड स्टेट के साथ बाइंड करता है। तो अगर इनएक्टिवेटेड स्टेट बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होगा तो ये ड्रग्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम ड्यूरेशन के लिए इसके साथ बाइंड होंगे, और इस तरह इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सोडियम चैनल पर एक्शन पोटेंशियल के जो एट्रियल मसल के जो सोडियम चैनल्स है उस पर ही कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दस इट इज़ इनइफेक्टिव इन द atrial arrhythmia. And the seventh important point that they are rarely arrhythmic in contrast to the class 1A and class 1C which are arrhythmic. So अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। So the first drugs is the lidocaine. It consists of all the activity in which we have discussed above, and the important point is that it has a local anesthetic action. So we will discuss
Lidocaine also in the local anesthetic. Lidocaine is also called lignocaine. Talking about its pharmacokinetics, so its GI absorption is small, is very good, but they are not given orally because due to the increased फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो बहुत ज़्यादा हो, तो अगर हम इसको ओरली देंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा ड्रग्स जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा, तो जब हमारे पास ड्रग जो है बॉडी में बाकी नहीं है रहेगा एक्टिव ड्रग. एंड यूजुअली वी गिव इट थ्रू द IV एंड इन द फॉर्म ऑफ लोडिंग डोज एंड देन मेंटेनिंग इट थ्रू द मेंटेनेंस डोज. लोडिंग डोज इसलिए देते हैं कि जो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज इसलिए देते हैं कि जो ड्रग होता है इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है. इस रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर्स अबाउट इन द 8 to 20 मिनट्स. तो हम उस फिर पहले लोडिंग डोज दे देते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन ड्रग की जो है कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम फिर मेंटेनेंस डोज दे देते हैं. इट इज़ अबाउट 70% बाइंड टू द प्रोटीन and it can cross the blood-brain barrier. It is mainly elimination, as we already discussed, through the first-pass metabolism in the liver, and it has a half-life of about 1 to 4 hours. And after this, they are excreted mainly through the kidney in the urine. तो क्या होगा, एक important point आप याद कर लें कि you must decrease the dose in the heart failure in the hepatic disease. हार्ट फेलिवर में इसलिए कि हार्ट फेलिवर हो जाएगा तो जो क्या होगा, लीवर में जो है ब्लड नहीं जाएगा, लीवर में ब्लड नहीं जाएगा तो लीवर जो है लाइडोकेन को क्या करेगा. लीवर यूजुअली इसकी जो है मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है, तो लाइडोकेन जो है और लिग्नोकेन इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो उसकी कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी. और हेपेटिक डिजीज़ में जो है एंजाइम्स की वजह से और इसके डिजीज़ की वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म कम होगी. तो इन दोनों कंडीशंस में आपको क्या करना है, इसके डोज को डिक्रीज़ करना है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ. तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया एसोसिएटेड विद द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिजिटेरस टॉक्सिसिटी. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर अरिथमिया. Secondly, we can also give it prophylactically an acute MI to decrease chance of the ventricular arrhythmia. It can also be given prophylactically in the patient with acute MI to decrease chances of ventricular arrhythmia. लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ventricular arrhythmia के चांसेस को कम तो कर देता है लेकिन मोर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है. एंड दिस इज ड्यू टू अननोन रीज़न, इसका रीज़न का नहीं पता. सॉरी. अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में. सो द लाइडोकेन एडवर्स इफेक्ट्स आर मेनली CNS रिलेटेड लाइक हेडेक, ड्राउजीनेस, nystagmus, convulsions. These are belong to the brain and the blurred vision, confusion and the muscle twitchings. So they are mainly CNS related. Headache, drowsiness, nystagmus, convulsion, blurred vision, confusion, muscle twitchings. The second adverse effect is the hypotension, and this is due to the cardiac depression, and it mostly occurs due to the high doses. If we give the drugs in a very high doses, so it will cause cardiac depression, it can cause hypotension or decrease in the blood pressure. The second important class 1B drugs is the Mexelitine. It is the same as the Lidocaine. It is an analog of Lidocaine except that it has a very short very less first pass metabolism, and it has no cardiac depression effect. It is mostly used in the post-MI ventricular arrhythmia, which is resistance to the Lidocaine. Talking about its adverse effects, so they are also CNS related like tremor, confusion in the blurred visions, and they also cause the GI related adverse effect like nausea, vomiting and diarrhea, etc. The third drug, class 1B drug, is the Phenytoin, and it is same as the Lidocaine. It has the same general features, and it is usually used to treat the ventricular arrhythmia associated with digitalis toxicity, and digitalis cause the toxicity due to the formation of delayed after depolarization. So thus the Phenytoin do what? They inhibit the delayed after depolarization, and thus used to treat the ventricular arrhythmia associated with the digitalis toxicity.